morning, students. So today we are going to start our chapter number 2 of economics, people as resource. What do you understand by people as resource? People as resource का मतलब है कि how people can be a good source for the economy of a country. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक रिसोर्स की तरह हेल्प कर सकते हैं and how we can increase our skills and techniques so that we can be more useful for our economy. So let's start our chapter with the overview. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Now, what is the meaning of asset? Asset means something useful. तो पीपल एज रिसोर्स ये जो चैप्टर है ये पूरा हमें एक्सप्लेन करेगा कि कैसे एक कंट्री की पॉपुलेशन किस तरह से उस कंट्री के लिए एज अ यूजफुल सोर्स हो सकती है rather than a liability. Liability means a burden or a problem. So our whole chapter is focused on population being an asset. Asset means useful, not a liability. Liability means a burden. Population becomes human capital when there is investment made in form of education, training and medical care. In our last chapter we have read about the factors of production and in that our fourth one was human capital. So human capital means all the attributes and skills that helps in the creation of goods and services. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and ability. तो people as resource का मतलब क्या है? एक कंट्री में जितने पीपल वर्क कर रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है, उन्हें क्या बोलते हैं? People as resource. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. Gross national product means gross national products indicates the total income of our country. Like other resources, population also is a resource, a human resource. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look at the negative side. हमेशा हम लोग ये तो बोलते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है. इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, हमारे लिए एक प्रॉब्लम है. लेकिन अगर आप इसका पॉजिटिव सेंस देखो तो इट इज़ अ गुड सोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है दैट मीन्स वी हैव मोर पीपल विच कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स टू हैव हायर इनकम फॉर द country. So therefore, the more population we have, it can actually be very beneficial for the economy. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country just like physical capital formation. आप सब लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो. आपके पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें एंड आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे एंड फ्यूचर में भी दे आर कंट्रीब्यूटिंग more and more of their investments in your education. Why so? They want to have good education. So investment in education, health, training is a part of human capital formation. People क्या है? रिसोर्स है कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए. लेकिन इस पीपल को रिसोर्स बनाने के लिए और इफ़ेक्टिव रिसोर्स बनाने के लिए we need investment in our education, health and training. So investment in human capital through education, training, medical care yields a result just like investment in physical capital. जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं किस लिए? ताकि हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें. इसी तरह इफ़ यू वांट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर आवर कंट्री, the investments need to be done on the people.
This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained person, as well as the higher productivity of healthy people. तो जितनी आपकी अच्छी एजुकेशन होगी आप उतने ही ज़्यादा अच्छा अर्न करेंगे, और जितने आप हेल्दी रहेंगे उतने ही आप प्रोडक्टिव रहेंगे. सो देयरफॉर it is very essential for society also gains in other indirect ways, because the advantage of a more educated or healthier population spreads to those who themselves were not directly educated or given health care. In fact, human capital is one way superior to the other resources like land and physical capital, because human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, अगर आप हेल्दी होगे और अगर आप एजुकेटेड होगे तो यू कैन ऑल्सो हेल्प दोज पीपल हु डोंट हैव रिसोर्सेज टू एक्चुअली गेन द एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. तो इसलिए अगर यही बोलते हैं कि अगर आप एजुकेट होंगे तो यू कैन ऑल्सो एजुकेट 10 मोर पीपल, यू कैन टेक केयर ऑफ देम. तो इसलिए बोलते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि लैंड और कैपिटल इंक्लूड्स मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब ऐसे ही रहेंगे अगर ह्यूमन नहीं होंगे इनको यूज़ करने के लिए. क्या लैंड पे अपने आप एग्रीकल्चर हो सकती है? क्या मशीन अपने आप ऑपरेट हो सकती हैं? और मशीन को बनाता कौन है? ह्यूमंस. सो देयरफॉर ह्यूमंस एज अ रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इन द growth of a country's economy. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. But a large population need not to be a burden for the economy. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये एक बर्डन है, ये एक लाइबिलिटी है. लेकिन अगर हम अच्छे से इन्वेस्ट करें, सब लोग अच्छे से पढ़ें और हेल्दी रहें और अच्छे से ट्रेनिंग लें, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है एक लाइबिलिटी की, एक बर्डन की हमारी कंट्री पे एक्चुअली में टर्न हो सकती है. किसमें? एसेट में. एंड वी कैन बी वेरी यूजफुल फॉर आवर कंट्री. Now let us further understand through this video that how human capital formation is the most important factor of production. Land and physical capital like money and machines. However, imagine what would happen to these resources without human capital. Without human capital, resources like land and machines would be of no use and just waste away. This is because human resources put other resources to productive use and not the other way around. The difference that investment in education, medical care and training makes to human resources is evident in all production sectors, including agriculture. The Green Revolution in India is a direct result of better knowledge and techniques provided to farmers. For many industries like the IT industry, skilled manpower or human capital than machines and equipment. Healthcare and training make a population an asset to a country. Thus, these are the three factors that determine the quality of a nation's population. Uneducated, untrained and unhealthy people find it difficult to take care of themselves and can do little for society. Thus, they are a nation's liability.